हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिट कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे हो। सो गाइस, आज हम सोया चंक फ्राइड राइस ट्राई करने वाले हैं, जो काफ़ी हेल्दी और आप इसको इजीली बना लेंगे। इन केस आपको कुकिंग नहीं भी आती है तो आप इसको इजीली बना लेंगे, बट उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा विदाउट स्किप, और आप इसको इजीली ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली इसको बना लेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना और एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So here we took 60 gram of brown rice and our other chopped ingredients, and those are capsicum, cabbage, carrot, green peas and soya chunks. Soya chunks is for high protein, that's why here we use brown rice. So now let's start. So because this is oil free, that's why we did not use any kind of oil. And now we use black pepper here, because black pepper is more healthier than red chili. And then we add all our chopped ingredients. Now we add our rice, that is brown rice. और यहाँ पर आपको पानी का मेजरमेंट जो है वो ब्राउन राइस हमने जितना लिया हुआ है उतना ही हम पानी लेंगे, दैट मीन्स 60 ग्राम्स। और हम इसे कुकर में बना रहे हैं बिकॉज सारे न्यूट्रिशन सेफ रहते हैं। नाउ वी ऐड सॉल्ट एज पर टेस्ट एंड 10 मिनट्स तक हम इसे कुक होने रखेंगे, और यू कैन से 2 सीटी आने तक इसको कुक करेंगे। एंड आफ्टर दैट हमारे सोया चंक्स ब्राउन राइस विच इज़ अ फ्राइड राइस बन के हमारे तैयार हो जाएंगे। सो मेक श्योर आप लो फ्लेम पे ही रखें। एंड या so here our soya chunks fried rice is ready, and as you can see this is very delicious, at the same time very healthy and easy. So I hope you like this, and make sure you try it at your home and let us know in the comment section below how you like it. And if you like this video, please make sure you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon. We will see you in our next one. Till then, bye. Take care. Thank you.